Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Anshu Verma here. I hope you guys are safe at home during this lockdown. Please be safe, stay home. So today I'm here for office look which I'm going to create. So yes, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि what makeup should be done for when we are going for a presentation और office meeting के लिए भी हमें किस टाइप का मेकअप करना चाहिए, at least थोड़ा presentable लगे. So here's the look and how I created this I'm going to show you. So please stay tuned and watch this video till the end. So guys, before starting my makeup I'm going to prep my skin because skin को prep करना बहुत ज़रूरी है. जितना सुंदर और healthy skin आपकी दिखेगी ना, उतना ही सुंदर आपका makeup दिखाई देगा. So before that you have to wash your face, apply toner, most important, and apply moisturizer as well and primer as well. So these 4 steps are most important before your makeup. So let's start and prep my skin. I have already washed my face, so let's start with the toner. I'm going to use this Biotic Bio Cucumber toner for me. So now next step is moisturizer. Same brand Biotic Morning Nectar moisturizer I'm going to use. और जितना अच्छे से अपने स्किन को प्रेप करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप दिखाई देगा. This is L'Oreal Base Magic Transforming Smoothing Primer. This is nice guys. Take a little bit of it, apply it all over your face. अच्छे से ब्लेंड कर लो. जो बच जाए उसको फिंगर से नेक पे अप्लाई कर सकते हो. आई वाज सेइंग कि ऑफिस जाना है एंड फिर भी इतना सारा मेकअप करना है. देयर इज़ नो नीड ऑफ लॉट ऑफ मेकअप इन ऑफिस, बट यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, राइट. प्रेजेंटेबल लगना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग्स एंड कोई स्पेशल आउटिंग है ऑफिस में, कोई फॉर आउटसाइड मीटिंग्स में जाना है. सो एटलीस्ट यू शुड लुक प्रेजेंटेबल, not so Yankee types. So as you can see, I have a little bit of dark circles and darken hair also. For that I'm going to use this Elegol concealer. So let me tell you, for concealer you can go with the shade which is one tone darker to your skin tone, not go for the shade which is equal to your skin tone. बहुत सारे लोग इस मिक्स में रहते हैं कि हमें सेम स्किन का कंसीलर यूज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं है. ऑटोमेटिकली एज यू कैन सी इट्स अ डार्कर टोन, राइट, फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो मुझे इसके लिए एक टोन डार्क ही लेना होगा इससे कंसीलर. ओके, आई एम गोइंग टू अप्लाई माई कंसीलर, नॉट सो मच क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है ऑफिस में. इट शुड लुक प्रेजेंटेबल ओनली, दैट्स इट. जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, वहाँ वहाँ आप अप्लाई कर लो. नाउ वी कैन ब्लेंड इट विद द ब्लेंडर. It's done, as you can see. So after apply concealer you can use any BB cream अगर आप चाहो तो, and all the rest you can use any foundation as well. So I'm going to use this L'Oreal Infallible 24 hour Stay Fresh Foundation 24 hour. So this foundation I'm going to use today. Just a one pump is enough क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है. So I'll take it like this and apply it all over my face. So as you can see, it's looking very natural. बहुत कुछ नहीं किया है. Now I am going to pack it with my compact. This is from Forever 52. You can use any one, either it's from L'Oreal, Lakme, Maybelline, or other brands as well. Now it's time for my eyebrows. आईब्रो फिलिंग थोड़ा अच्छा लगता है. अच्छे से आपकी आईब्रोज जो हैं परफेक्ट लगनी चाहिए. ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस NYX eyebrow pencil.
बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है आईब्रोज, जस्ट गिव अ फीलिंग जहाँ पर थोड़ा खालीपन है। Yeah, my eyebrows got done. So now I'm going to contour my face. बहुत ज़्यादा नहीं, little bit, to give a shadow to my face. So using this MAC bronzer. Blend it very properly. So contour has got done. बहुत हल्का हल्का. Okay, for my eyes, I'm not going to do too much of eye makeup. So उसके लिए मैं सिर्फ एक हल्का सा शेडो दूंगी आईज में, जिससे कि थोड़ा सा ब्रॉन्ज इफेक्ट आए. That's it. Not so shiny, only matte. So this is a Revolution blusher palette. So I'm not going to use any eyeshadow palette. You can do shading with your bronzer as well. I'm going to take this brown shade. Just crease line पे apply कीजिए. Now can you see the difference? Natural effect दिया है. Now with the same palette, I'm going to use blusher. Blusher बहुत अच्छा लगता है, you know. I will not go for the very much pink shades. The bronze and this peachy one is good. Smile. I'm going to use the kajal from Chambord. What I'm going to do with this, I will blend it with my brush ताकि ये इक्वल लगे. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको काजल लगाना पसंद है और जिनको काजल लगाना नहीं भी पसंद है. आई एम नॉट सो काजल पर्सन, बट स्टिल मैंने आज अप्लाई कर लिया. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम ऑन माई अपर आईलिड्स एज वेल. So now it's time for the lips. I'm going to apply the nude shade on my lips today. So this is the lip pencil which I'm going to use. This is from Forever 52. And the most important thing is your lipstick should be perfect, like anything. I'm going to use the lipstick from Lakme. This is a newly launched lipsticks of them. And this is actually so nice, so matte and super stay it is. अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाइलाइटर तो लगाया है नहीं, बट इन द ऑफिस हाइलाइटर विल नॉट लुक गुड. इट विल सो शाइनी. ठीक है, हाइलाइटर इज गुड फॉर द पार्टीज एंड फंक्शंस एंड ऑल, बट नॉट फॉर द ऑफिस. This is an easy to go look for your office and hardly it takes time. I have used minimal products in this. Kajal, lipsticks, foundation and your concealer. You can use the bronzer as an eyeshadow as well. Blusher. Blusher is a good, it gives a good freshness or glow at your face as well. So now it's time for the hair. Let me do something. Okay, so for your hair it's totally depend on you कि आप क्या करना चाहते हैं. You can do a pony, you can do a bun, either it's high bun or a low bun, or you can open your hair. Okay, it's totally depend कि आप ज़्यादा किस में comfortable हो और किस में ज़्यादा अच्छे लगते हो खुद को. Yes. So I have done a high pony today. गर्मी है तो open hairs can't handle me.
So this pony with this look is looking perfect, I guess. So now it's time for the mascara. Don't forget it. I'm going to use Lash Sensational Maybelline Waterproof Mascara. Guys, waterproof mascara use करना is most important क्योंकि summers हैं, you know, sweat से आपका mascara फैल सकता है, which will not look good. So you should take precaution by using waterproof mascara. बहुत अच्छे से मस्कारा यूज़ कीजिए. Take a 2-3 coats of this. So this is the final look. I hope you guys like it. So guys, please let me know in the comment section below if you like my video, and don't forget to subscribe my channel, and please it's my request to everyone to hit the bell icon as well, so that you will get all notification of my makeup videos whenever I'll get uploaded. Thank you so much, and thanks for watching. Thanks for your love.